The Border Gavaskar Trophy is only days away, and a big question that is on the minds of every Indian fan is that what is their pace attack going to be like? And I have with me, as always, Love Ved, and we're going to discuss, how that pace attack, sort of compares to that Australian side, because उधर भी काफी बड़े बड़े लोग हैं. Comparison है. धुरंधर है, धुरंधर comparison धुरंधर है उधर, लेकिन बिल्डअप दे रहा था यार मैं. But don't forget, last time also we had a very inexperienced pace attack, but then क्या किया था, झंडे गाड़े थे हमने, खाड़ दिए थे, गाबा का घमंड तोड़ा था हमने. बस देखो एक ना अब तराजू होता है, तराजू जब आप उसमें तोलते हो ना दो टीम्स को, तो इट्स कॉल्ड ऑन पेपर्स. लेट्स टॉक इन क्रिकेटिंग लैंग्वेज, ऑन पेपर्स. ओह माय गॉड. लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप क्या है बॉलिंग की. ठीक है, ओके, मतलब लाइनअप क्या, वो तो हमें पता ही है. लाइनअप 3 बंदे तो खेल ही रहे हैं और वो तीनों बहुत अच्छे बॉलर हैं. उनकी जो स्क्वाड है उसमें ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स जो हैं उनकी क्या स्थिति है, स्थिति उनकी कितने विकेट्स हैं. ओके, मिचेल स्टार्क 358 विकेट्स, there's Pat Cummins 269 wickets, Josh Hazelwood 273 wickets, there's Scott Boland with 35 and Mitchell Marsh with 48 wickets. So that's a total of 983 wickets there. तो ये तराजू यहां जा रहा है. ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं. hold on, 983 विकेट्स लिए हैं उन्होंने, उनके पेस अटैक में मिला के 983 विकेट्स. ठीक है, अब इंडियन पेस अटैक पे आते हैं. बुमराह 173, बस यहीं तक इंटरेस्टिंग था. उसके बाद आता है इनएक्सपीरियंस. सिराज with 80. Siraj has 80 wickets. Okay. Then there's Akashdeep 10. Harshit Rana yet to debut. Nitish Kumar Reddy yet to debut. Prasidh Krishna with 2. तो ये टोटल प्रसिद्ध कृष्णा with 2 ये बनता है विक्ट्री टोटल होता है वो 2 से विक्ट्री 265 जो कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड की इंडिविजुअल बॉलिंग जो उनके विकेट्स हैं उससे भी कम है. बट देन अगेन लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम क्या हुआ था. सो जो मैं तराजू की बात कर रहा था, सो लेट्स से क्रिकेट में बोलते हैं कि ऑन पेपर्स क्लियरली ऑस्ट्रेलिया हैज एन अपर हैंड. ऑस्ट्रेलिया हैज दैट बैलेंस इन देयर बॉलिंग अटैक एज फार एज दैट इज कंसर्न. इंडिया का थोड़ा सा कम लगता है, ऑब्वियसली लगता है. अपार्ट फ्रॉम बुमराह ऐसे देखो तो लगता है कुछ है ही नहीं. बट देन जो अभी सिद्धांत आपने बोला, व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम वाज ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट टेक एनी बॉलिंग अटैक लाइटली. सो इंडिया के जब बेंच स्ट्रेंथ उठ के आके आपको मार सकती है, तो आई थिंक ये तो अभी फिर भी एक्सपीरियंस थोड़ा गेन कर लिया. You know how many injuries we had that BGT, that Border Gavaskar Trophy. There's a time. Also, it was a bio bubble. मतलब आप सोचो कितने लोग इंजर्ड हुए थे यार, मतलब हद ही हो गई थी. कभी बुमराह इंजर्ड था, कभी अश्विन इंजर्ड था, कभी जडेजा इंजर्ड था. आपके स्पिन डिपार्टमेंट में फिर आप खिला के नहीं रहे हो. T Natarajan, who was there as a squad pacer for you to face in the nets, उसको you had to draft into your 11. नवदीप सैनी इंजरी के साथ खेल रहा था. मतलब it was just crazy that time what we witnessed. शार्दुल ठाकुर, like that Border Gavaskar Trophy made so many stars. People like relatively unknown quantities, right? Not many people knew and not many people even hoped कि कुछ हो पाएगा. Because when you go to Australia facing that pace attack, facing that experienced side, जिन्होंने हमें पहले 4-0 भी धोया है, but after that you suddenly look at this Indian side and they had that also at the back of mind कि उससे पहले वाली BGT भी वो जीते थे. I think that also played on India's mind कि we have done that before, we can do it again irrespective of the person. I think all of them came together to win it for India. BGT तो मतलब वार्नर और स्मिथ के साथ भी हम जीत गए थे. पहले तो वो नहीं थे, but then still that's why I'm saying it wasn't a flash in the pan. वो सीरीज जीत गए भाई हम उनसे. ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो चलो हमने डिस्कस कर ली, वो तो चलो बैटर्स को देखना है हमारे. बट देन डू यू एक्चुअली फील दैट जो अभी हमारी इंडियन बॉलिंग अटैक है, एंड कंसिडरिंग हाउ दैट सिमुलेशन मैच आल्सो वेंट बाय, इंडिया बुमराह के अलावा बहुत ट्रबल करने वाला है? Love, it depends on who you are playing. Of course there are problems. चलो ये डिस्कस कर लेते हैं. there are problems with the batting also, we will discuss that later. क्या आने वाली लाइनअप आपकी? Perth है. I think I'm only going to play one spinner. Same.
Who would it be? Let's get that out of the way. मतलब I don't think we have to say it. We know it's gonna be Ravindra Jadeja. It's gonna be Ravindra Jadeja, but I think मैं तो अश्विन के साथ जाता. मतलब आप अश्विन के साथ जाते, maybe the bounce would have helped him, but भैया India loves playing Jadeja in overseas condition when it comes to playing just one spinner. So we have seen that in the past, and that is what we are gonna be expecting. कुछ ऐसा नहीं होता है तो वो थोड़ा surprising हो जाएगा. So मैंने कुछ टाइम पहले भी बोली थी. So when you compare both those players on wickets, तब तो कुछ वो है ही नहीं. That's out of the equation क्योंकि अश्विन की बहुत ज्यादा विकेट्स हैं. ठीक है. हम पेस अटैक से हम स्पिन पे क्या आ गए हैं? नहीं, क्योंकि हम पूरी अटैक की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे इंडियन बॉलर्स. ओके. सो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट बोलती है कि जडेजा टीम में होता है ओवर अश्विन इन ओवरसीज कंडीशंस बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग भी आप कंपेयर करोगे, अश्विन के ज्यादा रन्स हैं, अश्विन की ज्यादा सेंचुरीज हैं. Yeah, but Jadeja has improved as a batter immensely in the last 3-4 years. I agree. I'm not taking away that fact, but my point is, here's a bowler who constantly has to prove himself. But would you say Ashwin is a better batter than Jadeja? If you yes or no? No, don't say if you look. Just answer yes or no. Yes, in Test cricket. Ashwin is a better batter than Jadeja. In Test cricket, yes. I disagree. I think Jadeja now at least is definitely a better batter than Ashwin, and I think that is why the team keeps playing him ahead of Ashwin. Because they believe that तो फिर अश्विन के रन्स कैसे ज्यादा है? बैटिंग भाई घर पे ज्यादा है ना. ओवरसीज कंडीशन में कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं पहले वो भी देखो. अब यही प्रॉब्लम है ना, जडेजा बाहर खिला ही नहीं रहे आप. अब भाई वो वाली अब सिचुएशन तो बहुत सारी हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक स्टिल irrespective of the conditions Jadeja is a better batter than Ashwin. You disagree, we will agree to disagree. I mean, but okay, let's move probably come in and answer के भाई ओवरसीज कंडीशन में कि अश्विन को बार-बार प्रूव करने की जरूरत है about his mettle as a bowler and as a batter. No, not mettle proof करने की जरूरत नहीं. It's about if you had to pick one, who would you pick based on batting? If you Australia never leaves it to the match के भाई और conditions के नेथन लाइन खेलेगा कि नहीं खेलेगा. जो बेस्ट स्पिनर है वो खेलेगा. अश्विन आपका बेस्ट स्पिनर है कि नहीं है? अश्विन आपका बेस्ट, आपने मुझसे हाँ ना पूछा. Is Ashwin your best spinner or not? हाँ, but bat. So कैसे अब आपका बेस्ट स्पिनर है उसको बट आप दोनों पड़ता है आप खिलाओगे कि नहीं. फर्क ये है कि आप दोनों को खिलाते थे हर जगह. The problem over here is that वहां एक ही स्पिनर खिला रहे हैं. कोहली के लिए होता, वो भी नेथन लाइन को ही खिला रहे हैं ना, एक ही स्पिनर को खिला रहे हैं. इंडियन मतलब अगर इंडिया में खिला रहे हैं, इंडिया में 2 को खिलाएंगे तो somebody will have to drop out ना. ठीक है, बट वो यहाँ के स्टार्क को ड्रॉप नहीं कर देते ना. No, but they have dropped Stark. अरे यार they have dropped Stark in the past. Not injured तब नहीं ना. भाई Stark has my point is they have rotated bowlers. They have actually played Pat Cummins and Josh Hazelwood in one of those games, not against India, maybe some other team, but Stark has been rested. अब वो rotation कह लो, वो rest कह लो, जो कह लो. I think they never say कि अश्विन, जैसे हम बोल रहे हैं कि अश्विन से ज्यादा बेटर प्लेयर हमारे पास ओवरसीज कंडीशंस में है. That's why I think जो आपका बेस्ट प्लेयर है वो बेस्ट प्लेयर है. और I think if you had to pick one spinner, India will keep picking Jadeja. Anyway, I know. But yeah, let's see. Let's move on and please do comment and tell us आप इस बारे में क्या सोचते हो. किसके साथ हो आप? जडेजा खिलाएं, अश्विन खिलाएं, even though Ashwin is a better bowler. And I like Jadeja. Not taking away that fact. कैसे हम अब numbers tell a different story. But whatever it is, बाकी आप कह रहे हो 4 pacers. 4 pacers, yes. I think no, 4 pacers maybe you could look at having a Nitish Kumar Reddy because he impressed in that game. So why not give him an opportunity? But my point and is play him as the all-rounder, second all-rounder. Even I want him to play, and sources say that he's probably about to make his debut. In line for a debut. But then बैटिंग में do you actually feel कि वो इतना ज्यादा लंबा एक वो innings खेल सकेगा अभी? No, but if you are looking at as an all-rounder, no, but do you expect Ashwin to play a very long innings also, for that matter? Because right now you are looking. For, no, I'm not comparing him. I'm just asking. I'm just taking your opinion here. Generally, as a person, उसको क्या लग रहा है आपको देखे? Genuinely, I will have to say we will. As a prediction. Prediction, I think he will score runs. Even I think so. I think he'll score runs. I think so. Maybe the conditions might not be too great for batting because Perth में we know people get out edging. Like a lot of times the bounce takes your wicket. There'll be a lot of short deliveries aimed at you. But I think Nitish Kumar Reddy is sort of a player who takes on the game head on. And I think that will work. You like those players, and I think that is why maybe Gambhir will prefer him also. Because और एक और चीज पता है क्या? जज्बा जो दिखाता ना आदमी की खेलना है मुझे करना है वो वैसे टाइप का प्लेयर है. And I also feel if Nitish Kumar Reddy plays, you can probably play a pacer less and you can add another batter there.
so आपकी बैटिंग भी स्ट्रांग हो जाती है. नहीं, फिर नीतीश कुमार रेड्डी बैटर भी है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, agreed. it adds But value. then he has to bowl long spells as well. He should be ready for that because बुमराह इतना लंबा नहीं करेगा. और कोई 4 टेस्ट सीरीज इंडिया का कोई भरोसा नहीं यार, इंडिया का कोई भरोसा नहीं. They might play Ashwin Jadeja, and if there are big cracks that they think will happen on that Perth wicket, they might play both spinners also as well as Nitish Kumar Reddy. You know, तीन ऑलराउंडर के साथ, तीन ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, and then we will have 3 pacers. So बाकी पेसर्स जो आपको लग रहा है जेन्युइन पेसर्स कौन होंगे अपार्ट फ्रॉम बुमराह, बाकी दो? See, Bumrah will play. I think एक तो Harshit Rana. I think he's in line for a debut. He's debuting. I'm telling you. He is in line for a debut. Everybody was super impressed with him during that game. Absolutely, Apparently, he bowled like he put in a lot of effort with his short deliveries, troubled the batters on all 3 days. That is. And when you have somebody who's bending his back and fetching that extra bounce on that wicket, and I think he bowls that perfect length that will suit at least Perth. So Optus Stadium में match है, expecting another. बात है कि उस बंदे ने आईपीएल में आपको दिखाया है. नहीं, also गंभीर भी है ना, मैं कह रहा हूँ गंभीर will be like यार ले लो इस लड़के को, ये जिता के गया. अब आप ये सोचो ना, 13 मैचेस में आईपीएल के 19 विकेट्स ही टुक, जिसमें एक मैच उस पे बैन था बेचारे पर और 2 मैच वॉश आउट हो गए थे तब भी. नाउ एडिंग टू दैट, यस वहां पे he impressed everyone for sure. पर्थ में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है and he was literally unplayable for all 3 days. आपको पता है उसके डोमेस्टिक में बैटिंग एवरेज क्या है? बैटिंग मैं ये भी करता, एक और बंदा में मेरा पॉइंट ले लिया लंबे, बट आई वाज टेल ऑफ कोर्स यू टेल द व्यूअर्स. 42. यस, सो आई वाज कमिंग ऑन दैट कि हम 3 ऑलराउंडर तो खिला ही रहे हैं, एंड इफ यू प्ले हर्षित राणा, ही इज गोना एक्ट एज अनदर बॉलिंग ऑलराउंडर, you know, who can smash it also. He can really hit those big sixes. IPL maybe we saw 42.63 average in first class. Arey, that guy can take wickets, that guy can bat well. I think भाई ऋतुराज गायकवाड की 41.5 है. बताओ. हर्षित राणा has a better first class average with the bat than compared to CSK fans, if you're watching, leading, see, गाली मत देना. बहुत सारी innings खेली है ऋतुराज गायकवाड ने obviously. So there's no comparison on those lines, but then no, but he's not, at least no mug with the bat. No mug with the bat. You know, by India, how many times we have won test matches when the lower order has bailed us out? I think if you look at our record in the last 4 years, overseas conditions, the best we have performed is when our lower order has clicked. चाहे वो बुमराह शमी हो इंग्लैंड में, चाहे वो शार्दुल वॉशिंगटन जैसे लोग हो, गाबा में भी, और मतलब आप कंडीशन समझ सकते हो. This Washington Sundar as well for reckoning यार. तभी तो कह रहा हूँ इतने ऑप्शंस हैं कि आप बताओ Washington Sundar, जडेजा और अश्विन. सुंदर इज नॉट प्लेइंग. Sundar is not playing. Sundar is not playing right now. उसको तो विंडो से बाहर फेंक दिया. नहीं, विंडो से बाहर नहीं फेंका. I think Sundar won't start at least. Maybe towards the end of the series we'll see him. But first test, Akashdeep. I mean Akashdeep when he. So I was coming to my third pacer. Bumrah. हाँ. Siraj. Bumrah, Siraj तो मैंने बोला नहीं है. अच्छा. Bumrah, Harshit Rana and Siraj. I think Siraj will play. Yeah, I feel yes, Siraj, since he has played in Australia before, even I will start with him. But his some point series, in that series, his debut series Australia. Yeah, but at Tests. some point in this series, I seriously want to see Akashdeep because here's a guy No, Akash on debut against England. भाई आपको आजकल इतनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना टू प्रूव दैट यू बिलोंग टू दैट स्टेज एंड ही कैश्ड इट इन. India में the way he was swinging the ball, he was unplayable. I agree, he was great in India, but I'll talk about this simulation also, match simulation that they had. He was one of those who looked off color, and that is why I think it might go against him. I agree. It might go against him because Harshit Rana has impressed so much, and by the way, Akashdeep is also no mug with the bat. He can also score some runs, but Harshit Rana is a better batter than even Akashdeep. I think Rana will get to make his debut, and Siraj and Bumrah, I don't think they're going to separate that pair at least in Australia in the first game. Yeah, Siraj has also been in and out of the team when you're playing here. I agree to that. No, but only here, but internationally, if you look at all overseas, you need Siraj. Overseas conditions, he has been there, and even when Bumrah was not there, Siraj was leading that. His debut series, you remember, he took that 5-wicket haul. Siraj, शमी भी जा रहा है वहां पर. शमी जाएगा eventually. I think he might play the 4th and 5th test also for all you know. Let's see. No, let's see. Hypothetically, let's imagine this. क्या pace attack है? India need to win that 5th test to qualify for the World Test Championship final. 4-1 जीतना है भाई हमें. ठीक है. तो ये situation है. I'm saying hypothetically, and this suddenly that Shami comes in and he again picks up
7-8 विकेट्स जैसे उस बेचारे के साथ होता है, पहले खिलाते नहीं फिर आता है तो तहलका. I mean, this would be a script written in heaven. It'll be, but I'm frankly not too sure whether they will play Shami. If these pacers are doing well, I think they're gonna keep it to that. For sure. Shami, I think It's is just for backup. backup option होगा अभी के जैसे लिए. पटिकल को रख लिया बैटिंग के लिए. Particle को रख लिया. And we will talk about. By the way, I think कब करें? 20th को करते हैं. 20th को हम करते हैं India 11. So that'll be our next video on India Australia series. Yeah. 20th. But before that, you please let us know about what do you think about the Indian bowling lineup and कौन से pacers होने चाहिए, क्या combination होना चाहिए, 2 spinners हो, 1 spinner. लव ने आपको स्टार्ट तो बता ही दिया है कि हमारे नंबर ऑफ विकेट्स इज लाइक ऐसे हो रहा है. 1/4 of what Australia have achieved. like उनका जो पेस अटैक है तो काफी डिफरेंस है. But always guys, always I am happy being the underdog. I'm happy. मजा आता है, उसी में तो मजा है. I'm happy being the David in this Goliath battle. You know, that is how India won that series last time, and let's hope it happens again. I think it's happening again. It's happening again. Three The time- way we have three been time playing, in a row. the way we have been playing Test cricket, like the way we lost to New Zealand. थोड़ा नहीं वो यार मैं बता रहा हूँ थोड़ा ना, ऐसे you know करके why? ऐसे आ गया You know थोड़ा. why? अरे केएल राहुल आ गया ना. I'm telling you अगले 4-5 साल केएल राहुल फाड़ेगा in Test cricket and ODIs. Probably in T20s. Love's prediction for KL Rahul, guys. How many of you agree with it? Please do let us know in the comments. उसमें KL उसमें Rahul ज़्यादा comments आ fans, जाएंगे. assemble! But anyway, thank you so much for watching. Do let us know in the comments again as we keep talking about what you make of India's squad altogether and whether Nitish Kumar Reddy and Harshit Rana should be making their debut in Perth. Thank you again.